हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रैक एंड सिट। आज हम करने वाला है टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 2 सेकंड लेक्चर। इट्स अबाउट फिल्म्स एंड बुक। जस्ट लेट्स गेट इनटू द सिलेबस वंस अगेन। It's based on popular films on education, books and documentaries showing the struggles of girls, tribals and Dalits। ठीक है ना। इसमें हमने these portions क्लियर किया था, this girls portion, है ना। एंड लाइक गर्ल्स पोर्शन एंड एजुकेशन पोर्शन हमने पहले लेक्चर में क्लियर कर दिया है। And now in this video we are going to focus more on these tribals, Dalits and unprivileged. ठीक है। So before getting into the syllabus like subject portion, let me tell you something else। ठीक है, just for 5 minutes। एक कमेंट भी आता स्ट्रेटेजी वीडियो के लिए वोट है। ठीक है। So I'm telling guys a very important thing। पहले वीडियोस में भी मैंने बोल चुका है, लेकिन दिस इज आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इन अ मोर क्लियर फैशन टुडे। ठीक है ना। सो दिस वीडियो इज कमिंग टू यू ऑन 13th, है ना। एंड आवर एग्जाम इज ऑन 29। ठीक है। दिस मंथ हैव 31 डेज, दैट मींस एग्जैक्टली अभी कितना डेज बचा हुआ है? 13 डेज। दैट मींस लगभग एक महीना, है ना। एंड गाइस, इफ यू even if you are trying to focus in this exam NCET 2025 right now, I'm telling you guys, you can have good marks and even you can come into IITs with just 1 month preparation। मैं ये बोल रहा हूँ guys, I'm not telling lies। ठीक है, let me explain then you will understand। PCM है हमारे पास, एंड लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, जीटी है। ये पीसीएम से 25 इंटू 3 क्वेश्चन, ये पहले वीडियोस में भी ये बोल चुका है, 75 क्वेश्चन आ रहा है। ये सब मिलके 85 क्वेश्चन आ रहा है। इफ यू लाइक, बहुत लोग ऐसा ही भी है कि ड्रॉप ईयर कर चुका है जेई या नीट। ठीक है। फॉर दोस गाइस दिस पीसीएम बैकग्राउंड इज देयर। ठीक है। इवन इफ यू हैव जस्ट पास्ड लाइक जस्ट राइट योर +2 एग्जाम्स नाउ, within it was within weeks, like before weeks, right? Even if you have done that, you have some idea about this PCM guys, है ना। I'm not telling you guys to ignore it, this is very important, लेकिन ये सब थोड़ा आसान है। You can do this thing in within 1 month, ये मैं ये बोल रहा हूँ। and let me explain how। ठीक है, क्या क्या करना है अभी, कितना 13 days बचा हुआ है। and maybe you guys are watching this video after some days, don't worry about that। even if you are watching this video and you have 10 days left, let me tell you how to tackle NCET 2025। ठीक है। so yeah, what we have to do, कैसे tackle करना है? every day, every single day you have to practice questions from PCM। ठीक है। PCM we have 3 subjects and we only have 12 subject, right? so we have to, I'm telling you guys, you have to at least like uh, 2 to 1 point, like yeah, almost 2 3 or 2.5 chapters per day, chapters per day, if you're starting right now, chapters per day। ठीक है। this is important guys। then you will be having almost ये 2 to 3, okay, ठीक है। then you will be having like almost 90, like 3 into 30, almost 90, है ना। so your PCM, this should be your strategy for the PCM। हर दिन एक चैप्टर लेके करना है तुम। ठीक है। वो कैसे कर सकता है? इफ यू हैव सम बेसिक नॉलेज इन दैट गिवन चैप्टर, डोंट गो फॉर थियरीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, फोकस मोर ऑन क्वेश्चंस। ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, इसीलिए क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस डालना ही है। ठीक है। सो बट देयर विल बी सम चैप्टर्स इन विच वी डोंट हैव एनी आइडिया। ठीक है, वो भी हो सकता है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको थोड़ा थियरी में भी फोकस डालना है। यू कैन यूज आवर वीडियोस फॉर दैट पर्पस। ठीक है। सो या दैट्स अबाउट पीसीएम। बाकी सब्जेक्ट कैसे करना है? बाकी सब्जेक्ट से 85 मार्क्स आ रहा है, लाइक 85 क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है। सो हाउ टू टैकल दोस क्वेश्चंस?
तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियोस आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू स्कोर एटलीस्ट 75%, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ट्रिक्स एंड ट्रिप्स वो सब है. यू कैन इवन आंसर सम क्वेश्चंस, लाइक यू कैन आंसर सम क्वेश्चंस इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, ठीक है. इससे थोड़ा लाइक अच्छा चीज है टीचिंग एप्टीट्यूड. लैंग्वेज में क्या कर सकता है, लैंग्वेज इंग्लिश में एक फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है. उसमें भी मैं बता दूंगा द प्रॉब्लम ऑफ दिस लैंग्वेज क्वेश्चंस आर द अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है. लेकिन द अदर पार्ट इज दे द नेचर ऑफ क्वेश्चंस आर अनप्रेडिक्टेबल बट फिर भी these questions are easy. Many of these questions, I'm not talking about 100% of the questions, but I'm talking that, like I'm telling you guys that many of those questions are easy, ठीक है. सो वो कैसे टैकल करेंगे, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है गाइस. उसमें थियरी का, क्योंकि अभी एक ही महीना बचा हुआ है, थियरी करके कुछ नहीं हो जाएगा, क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कर, ठीक है. सो दैट्स इट. मुझे पता है, मैं इफ यू आर फॉलोइंग माय वीडियो रेगुलरली, I have already talked about this many times. Maybe you guys are getting bored. Sorry for that. But the thing is, this is very important, and I don't want you guys to miss this thing. इसलिए मैं बार बार ये बोलते रहता हूँ मैं, ठीक है. एंड अबाउट दिस लैंग्वेज का बारे में भी मैं बोल दिया, प्रैक्टिस इज द की. जीटी का बारे में भी, लाइक इन जीटी आल्सो यू कैन फाइंड सम ट्रिक्स गाइस, ट्रस्ट मी. ये टीचिंग एप्टीट्यूड में मैच द लिस्ट क्वेश्चंस है ना, इसमें बहुत ट्रिक्स एंड ट्रिप्स अप्लाई कर सकते हो. इवन इफ यू नो वन आंसर, मे बी यू कैन गेट 4 marks, ठीक है. So there are a art behind, as I mentioned in my last videos, it's an art of cancelling out options, competitive exams. ठीक है, competitive exams an art of cancelling out wrong answers instead of finding the right one, ठीक है. So that's it. और strategy में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि I'm not telling you guys the like chapter wise strategy अभी. If you want that, you can just comment. I will try to make one video like that. लेकिन अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 3 चैप्टर को माइंड में फोकस करो एक दिन पीसीएम में, ठीक है. और ये लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड जीटी हर दिन तुमको फोकस करना है गाइस. अभी हमारा स्कूल भी खत्म हो चुका है, अभी तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है. अभी वो एक 4 घंटा छोड़ो, ठीक है, 4 घंटा तेरा लाइक तुम्हारा एंटरटेनमेंट में तुम कुछ भी कर सकता है, लेकिन बाकी टाइम गाइस पूरा इसमें फोकस दे दो. एक महीने से आईआईटी हो सकता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक महीने से हो सकता है आईआईटी, if you have some basics in PCM, because I hope the in yesterday also the guys registered for this exam is like almost 65K, ठीक है. जेई के लिए 15 लाख बच्चे अपियर कर रहा है, उसमें से सिर्फ 15K को आईआईटी आ सकता है, ठीक है. एंड इन दिस एग्जाम लाइक 2 days before I hope 65K स्टूडेंट्स रजिस्टर कर चुका है, ठीक है. एंड इन maybe some of you guys are thinking that oh my god 65 बच्चा रजिस्टर कर चुका है, मैं क्या करेगा. ऐसा नहीं सोचना है हमको, क्योंकि many of these guys are like they are preparing for other exams, they just appeared in this, ठीक है. मे बी एक ड्रॉपर हो, मुझे पता है ड्रॉपर्स क्या करेगा, वो लोग हर एग्जाम्स को अप्लाई करेगा, ठीक है. मे बी ऐसे किया है, सो मुझे पता है, इसलिए बोल रहा हूँ. सो डोंट वरी अबाउट द नंबर्स, यू जस्ट फोकस अबाउट द फोकस अबाउट फोकस इन स्टडीइंग. एंड एक और क्वेश्चन आया था हमारे ग्रुप में, किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो, लाइक किसी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है क्या. ऐसा कभी नहीं हो सकता है यार, ठीक है. सिलेबस, यू कांट कंप्लीट सिलेबस इवन इफ यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन 2 years अगेन, 2 years बिफोर, ठीक है. सो बाकी लोग क्या कर रहा है उसके बारे में हमको मत सोचना है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं है. अभी तुमको क्या कर सकता है, आप लोगों को क्या कर सकता है, अभी पढ़ सकता है. एंड कैसे पढ़ना है, कितना चैप्टर्स पढ़ना है, ये अभी मैंने बोल चुका है, ये मन में रखो. ऐसे लाइक ट्राई करने का कोशिश करो, ठीक है. हो सकता है गाइस, डरना मत. सो या दैट्स इट. आई टोल्ड यू टू कवर 3 chapters per day because in the end you need some gap to just practice questions, ठीक है. It should be a just practice session.
And one more important thing I'm going to tell you guys is, if you are following our videos, you are all you are aware about that thing is mock test series. Okay, mock test series. We are launching a mock, like we have already launched a mock test series and it's starting from April 1st. ठीक है, तो इसमें तुमको क्या मिलेगा, मैं बोलता हूँ। टेस्ट फ्री है, सबके लिए फ्री है, अप्रैल 1 में आ रहा है वो, सबके लिए फ्री है, एंड यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनसीईटी इन अ क्लियर वे गाइस, ट्रस्ट मी। ठीक है, और सब करना ही है क्योंकि ये सब फ्री है। एंड द थिंग इज वी आर लॉन्चिंग अनदर full 10 mock test series for like in as a paid version. ठीक है, इसका असली प्राइस ऑलमोस्ट 500 है, 499, बट इफ यू आर बुकिंग इट राइट नाउ यू विल गेट द डिस्काउंट। ठीक है, सो वो हमने वेबिनार किया, उसमें भी क्वेश्चन आया ऐसा, लाइक पैसे क्यों ले रहा है। ठीक है, वी आर डूइंग इट इन अ वेबसाइट, ठीक है, सो इसीलिए वो होस्ट करने के लिए हमको ही पैसा देना पड़ता है। अदरवाइज वी विल बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड all of these things फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू गाइस। ठीक है, इसलिए मैं हमने वीडियोस भी कर रहा है, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा है फ्री में, लेकिन ये फ्री में हमको नहीं कर सकता है, हमको पैसा देना पड़ता है उसको, वो वेबसाइट होस्ट करने के लिए, ये सब मेंटेन करने के लिए, मूडल हैंडल करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम पैसा वी आर पेइंग, लाइक वी आर आस्किंग फॉर मनी फ्रॉम यू गाइस, बट गाइस द फर्स्ट मॉक टेस्ट इज फ्री, सबको करना है। इसके बाद तुमको एक आइडिया मिलेगा कुछ, लाइक कैसा आ रहा है ये पैटर्न, कैसा है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, और ये 3 घंटा में एग्जैक्ट एग्जाम एटमॉस्फेयर में तुम लोग ये करना। एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, इफ यू आर डूइंग दिस एग्जाम, ट्राई टू गो टू ए साइलेंट रूम। ठीक है, हमको हम कैसे एग्जाम देना है, रियल एग्जाम, वी हैव टू थिंक अबाउट रियल एग्जाम राइट नाउ, वी हैव टू perform this mock test as we are sitting in the exam hall, then only we will get full benefit out of it. ठीक है, so actually I'm also highly recommending you to buy the mock test series, because in total you are getting 11 mock tests, and it will be kind of more than enough for you guys to approach NCET 2000, the real 2025 NCET in a better way. ठीक है, इतना ही बोलना है मुझे अभी। ओ बहुत टाइम हो गया भाई, 12 मिनट्स हो गया, फिर भी ठीक है। अभी हम क्या कर रहा है, वी आर गेटिंग इनटू दी कंटेंट। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी मूवीज दैट डिस्कसेस दी स्ट्रगल्स ऑफ ट्राइबल्स एंड दलित्स। ठीक है, आई एम आल्सो इंक्लूडेड वन मूवी फ्रॉम दी वुमन सेशन बिकॉज आई काइंड ऑफ मिस्ड दैट इन द लास्ट लेक्चर। सो इसमें क्या करना है, दिस इज वेरी इजी गाइस, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मेमोरी बेस्ड है, दिस इज कंप्लीटली ए मेमोरी बेस्ड पोर्शन, मेमोरी बेस्ड पोर्शन है ये, सबको पता है। एंड what you guys have to do, you just have to remember it, और कुछ नहीं है। इसलिए मैंने थोड़ा अट्रैक्टिव स्लाइड्स बनने के लिए कोशिश किया है। ठीक है, आई होप इट्स काइंड ऑफ इट्स नॉट वेरी बोरिंग। पहले हम वी आर डिस्कसिंग द मूवी कॉल्ड कोट, 2024 मूवी है, लाइक 2014 मूवी है, and it follows a Dalit folk singer accused of inciting students with his songs, highlighting caste discrimination and the flaws in the Indian judicial system. This is the kind of award-winning movie, guys. तो इसको हमको लाइक इस मूवी को हमको ध्यान देना है। मूवी नाम है कोट, डिस्कस अबाउट दी, इट्स लाइक द स्टोरी इज अबाउट द दलित फोक सिंगर। ठीक है, and how the Indian judicial system is dealing with his problems. ठीक है, so इतना ही आगे चलता है, let's get into another movie called Mazan. ठीक है, it's a critically acclaimed Indian film directed by Neeraj Gaiwan. The film, set in Varanasi, intertwines the lives of several characters who are dealing with the complexities of life, death, and societal expectations. At its core, Masan deals with the impact of social norms, personal grief, and caste-related issues. ठीक है ना, guys? These movies are may not be like, I'm not talking about this movie. The movies in the coming slides may not be completely dependent on the movies about tribals and Dalits, but हम previous year questions भी discuss करेगा. Then you will get an idea what kind of questions are coming. ठीक है, so this movie name is Masan.
This is about this is set in Varanasi, and this is about the impact of societal norms, personal grief, and caste related issues. ठीक है ना? I am discussing the summary also because questions ऐसे ही आ रहा है. ठीक है? The questions is not just about which among the following movie is about the caste system. ऐसा questions नहीं आ रहा है. The questions are very specific है, इसलिए ये question थोड़ा tricky है. तुमको summary भी आना है. Then only you will be able to answer the question. That is the previous year trend. आगे चलता है. Now we have Fandry. ठीक है? This is a 2013 Indian Marathi language film directed by Nagraj Papatrao Manjule. The story focuses on Jabia, a teenager from a Dalit family living on the outskirts of the village of Kolner, who falls in love with Shalu, an upper class girl. ठीक है? तो मूवी का नाम क्या है? Pantry. 2013 मूवी है. It's a Marathi. ठीक है? And summary also हमने discuss किया है. So just go through that once. Now we have one more movie, Purna, but this is not completely focusing about the like the tribals. It's not. This is a movie about woman. ये हमारा देख भाई मैं दिखा दूंगा. In this chapter, the struggles of girls is also important. मैंने lecture 1 में ये कर चुका है, लेकिन फिर भी आई जस्ट फॉरगॉट टू ऐड दिस थिंग, इसलिए मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ. ठीक है? But this is an important movie. Purna. This is a 2017 Indian Hindi language biographical. It's a biographical adventure, guys. These are important because this is coming under one more unit also. ठीक है? इसलिए ज्यादा important है. Biographical adventure film directed by Rahul Bose. This film is based on a true story of Malavat Purna, who became the youngest girl in history to climb Mount Everest at the age of 13 years and 11 months. The youngest girl है, इंडिया से है वो. हम सबका like अभी like it's a proud of it's a, she's a pride for all of us, right? So this is a movie that discusses about the struggles and achievements of women. ठीक है? So I just included it because I forgot it. आगे चलता है. Next movie is Jai Bhim. This is a 2021 movie. ठीक है? It's directed by TJ Gnanavel, based on real events that took place in Tamil Nadu. This film is a socio-political drama centered around a case involving police brutality, caste discrimination, and the fight for justice by the marginalized communities in India, especially the rural side. ठीक है? मूवी का नाम क्या है? जय भीम. It was released in 2021. ठीक है? आगे चलते हैं. We have a movie called Akrosh. ठीक है? It was released in 2010. It's an Indian drama film directed by Priyadarshan, which deals with the deeply entrenched issues of caste-based discrimination, exploitation, and injustice in rural India. उनका नाम क्या है? आक्रोश. ठीक है? So yeah, एक और मूवी है अंकुर. It was a 1974 movie. ठीक है? This tells us a story of a young school teacher who becomes romantically involved with a Dalit woman in rural India, challenging the oppressive caste system and societal norms. As their relationship develops, it exposes the exploitation and discrimination faced by lower caste communities in the village. बहुत पुराना मूवी है. अंकुर नाम है, and it is like it is discussing the uh, things in 1974. ठीक है? So I think the director of this movie is Shyam Benegal. ठीक है? If actually slides में वो नहीं है, but I think I remember the director of this movie is Shyam Benegal शायद. ठीक है? So why I included this, even if it's an old film, because this is discussed about the struggles of a Dalit woman in rural India, and two aspects from this movie is aligning towards our unit. One is the woman part and second is the Dalit. Okay, so that's why this is also an important movie. And now let's get into one question so that you will be able to get an understanding of good understanding about what kind of questions you can expect. Which one of the following film is an empathetic portrayal of Delhi's EWS students is film? Purna, Sumi, Ready, Steady and Bridge. मुझे पता है guys, ये थोड़ा tricky question है. ठीक है? ये very like this is a very unpredictable question, and it may be kind of tough to answer these questions if you are not familiar with this.
ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकता है। टीचिंग एप्टीट्यूड ने मैंने बोला है 25% क्वेश्चंस विल बी अनप्रेडिक्टेबल, लेकिन उसमें भी कुछ हमको लॉजिक डाल के कर सकता है, लेकिन some kind of questions will be like this only, in which we have to have some prior knowledge in order to get the right answer. So इसका आंसर कैसे है, मैं आंसर डिस्कस करता हूँ, इसके बाद हमने बात करेगा इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। The answer is Ready Steady. It's a film co-created by the 10 teenagers from their lower socio-economic backgrounds in Delhi, document the lived experiences of students who managed to secure admissions in elite schools of Delhi through the economically weaker section quota, EWS quota. ठीक है ना? So this is about this movie Ready Steady. लेकिन ऐसा क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच कर सकता है, इसके बारे में मैं बोलूंगा। Actually, there is no shortcuts for this kind of questions. ठीक है, we have to know about this, and this is a very like sometimes the problem is that the movie won't be so popular. So है ना, so how we are supposed to know the name of the movie, and just merely knowing the name of this movie is not enough. We have to know the summary also, है ना. So my best recommendation is to be updated, ठीक है, because if you are familiar with the movies I have discussed, I guess and I hope that almost 30% is covered. लेकिन वो 70% फिर भी बहुत अनप्रडिक्टेबल है, ठीक है. मे बी वैसा थिंकिंग, सो हमने क्यों ये क्लास अटेंड किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि द मूवी आई हैव डिस्कस राइट नाउ दिस इज आल्सो कमिंग अंडर वन मोर यूनिट, ठीक है. सो दिस आर नॉट लाइक इन वेन, ठीक है. these are important, but I'm telling you beforehand that this unit can be unpredictable, लेकिन उतना unpredictable नहीं है. दो क्वेश्चन आ सकता है इस यूनिट से, and one will be maybe tough and one हमको कर सकता है if you are following these lectures, because हमने इस बारे में बोल चुका है. The next, one second guys, sorry guys, next question तुम लोगों को करना है, the movie Jane being does highlight the struggles of which tribe. एक बार पोस्ट करो and you guys have to answer this question. I hope you have gone through the question, but maybe it's still confusing to some of you guys. So I will explain, don't worry, but this is why I told you guys merely understanding the name of the movie won't help. क्योंकि इसमें क्या, what's the thing asked here? The movie J Beam does highlight the struggles of which tribe. सो दो ऑप्शन है हमारे पास, एक ही हमको ये समरी आना है, दूसरी है हम ये मूवी देखना है, ठीक है. देन ओनली वी विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. इसका आंसर क्या है, लेट्स गो टू जेबी, एक बार पढ़ लो. इधर देखो, स्पेसिफिक के लिए द इरूलर ट्राइब, है ना. So yeah, it's a movie that discusses about like it's political drama centered around the case involving police brutality, caste discrimination, and the fight for justice by the marginalized communities in India, specifically rural side. So इसलिए मैंने बोला summary, like knowing the plot of the movie is important in this unit. So क्या आंसर है, आंसर है 3, है ना. So yeah, that's it guys. This is why I told you before, this is a kind of unpredictable unit. But डरना मत, दो क्वेश्चन आ सकता है and one question you can do if you are prepared, ठीक है. लाइक दूसरा क्वेश्चन भी कर सकता है, लेकिन maybe it will be kind of tricky. I'm telling you this beforehand because you don't have to worry. Even if that goes, you don't have to worry anything, because हमारा if you are preparing, हमारा 75 to 80% is set, ठीक है. उतना ही चाहिए हमको, वो मिलेगा. If you are preparing सिंसियरली उतना मिलेगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है. सो इतना ही बोलना था इस वीडियो में. आई होप यू अंडरस्टूड, लाइक आई होप यू आर एबल टू मेमोराइज दिस. मुझे पता है इस वीडियो में कंटेंट ज्यादा कम था, लेकिन दी इम्पोर्ट लाइक फिर भी आई मेड दिस वीडियो बिकॉज आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दी importance of knowing the nature of NCET 2025, क्योंकि ये जेई का लाइक इट्स नॉट लाइक जेई एंड सीयूटी, ये थोड़ा अलग है. लाइक
थोड़ा सा अलग है. So if you are planning to join BSc B.Ed in IITs or NITs, you need to focus in a way which will be more helpful to crack NCET 2025, है ना. इसलिए we have to practice more in these 4 topics, and at the same time we are also supposed to give like we are also supposed to practice questions from PCM. बहुत important है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ. Maybe you guys are getting bored. I don't know if you're getting bored. Please let me know in the comment section. ठीक है, इतना ही है आज का वीडियो. Thanks for watching. Bye bye guys. Prepare well, and if you have some doubts, please let me know in the comment section below. Bye guys.